हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्ट्रीम थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट की है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि स्ट्रीम थोड़ी सी जल्दी एंड भी कर दूंगा। जैसे 1 घंटा हो जाएगा वैसे ये स्ट्रीम एंड कर दूंगा। और आज मैं हूँ वेडनेसडेज टू वेडनेसडेज अपने जो लाइव स्ट्रीम सेशन होते हैं उसमें आपके साथ बातचीत करने और बताने कि क्या चल रहा है, क्या हालचाल है, क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, और गाइडेंस देने। आई होप आपको ये स्ट्रीम देख के कुछ मज़ा आए। हालांकि मैं मेजरली जस्ट वेरी टेक्निकल बातें करता हूँ, बट आई होप उसमें कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ना कुछ एक मज़ा मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन टू द स्ट्रीम। आई होप आप सब लोग का दिन अच्छा गया होगा, एंड एज kcs.tech says always be happy. So first of all, hello to everyone. दयाल आरपी हाय। एंड फ्यूचर में ये गेम मोबाइल के लिए बनाओगे? सो आशीष, आई थिंक आप मुंबई गिलीस के बारे में बात कर रहे हो। सो सर्टेनली यस, मुंबई गिलीस को मोबाइल पे लाने के प्लान्स है। अपडेट अबाउट मुंबई गिलीस, मेरे पास मुंबई गिलीस से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट है। एक्चुअली काफ़ी बड़ा अपडेट है, बट वो मैं ऐसे नहीं अनाउंस कर सकता। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपडेट है मुंबई गिलीस रिलेटेड, जो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल लिबर्टी पे नहीं हूँ अनाउंस करने के। बट बहुत ही जल्द मैं आपको बताऊंगा। वाइनवुड का नहीं बता सकता, एक्चुअली नहीं बता सकता मैं। सीक्रेट है बहुत बड़ा शायद। यस, बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये अपडेट देने के लिए मुझे और 2 से 3 महीने लगेंगे, आई गेस 2 से 3 महीने। What is the upfront in hyper casual games with a publisher? So Ayush, it depends on your negotiation skills. It depends on how well you are able to communicate with the publisher on what do you think you can deliver. So I will give you a range. It can range anywhere from $500 per prototype to as high as $3,000 per prototype. मुक्ति के बारे में क्या ख्याल है? What do you think about मुक्ति? I think it's a great game under development by Vaibhav Chavan Studio, and I personally think that the graphics are obviously amazing because now it is being made in Unreal Engine as opposed to it being developed in Unity back in the day. So obviously graphics का upgrade तो है ही, साथ ही साथ I'm confident that the gameplay is also amazing. I will be meeting up with Weber to try out that game's build and see what is going on in that. So till that point of time, I'll just not comment much, but I really love what he's doing, and full support goes to Weber and his team for creating such an amazing masterpiece, I would say. Is it a horror game? It's a mystery crime exploration game, if you will. Can you interact with NPC like in Cyberpunk in mobile games? Yes, you can, Raman. When will new mobile games come? Well, we are currently working on a couple of hyper casual games, and in addition to that, we are also working on some small mobile games that will be launched under our own branding, जिसके लिए हम लोग यूजर एक्विजिशन कैंपेन्स रन करना स्टार्ट करेंगे. So details of that you will get very soon. I don't have any timelines as such, but we'll be sharing that very soon. Did you saw God of War release date trailer? So I did see that it was being announced. I think it is launching on in the month of November 2022, November or December. But I haven't seen that yet. What is exactly a portfolio? Is it a PDF file, a LinkedIn profile, a MS Word document, or an owned website? There are be any of these that you just mentioned. It can either be a PDF file, it can be a LinkedIn profile, it can be a Word document, it can be a website, it can be your uploaded artwork on Behance, ArtStation, whatever. Anywhere that someone else can come and see your work is essentially what a portfolio is, in simplest words. Make Unreal Engine tutorial. So Shinde, unfortunately at this moment I'm a bit tied up to create any tutorials, so I cannot make any tutorials right now. GTA 6 अपडेट यार, वो हमारी गेम नहीं है तो उसके बारे में मैं कोई अपडेट नहीं दे सकता.
What are the parameters of Gameon for hiring a concept artist? So Shubham, just send us your profile. Our email ID is hr@gameon.in. Just send your profile over there, and we will get back to you with our list of requirements. सर गो करोना गेम का टीजर कैसा लगा? गो करोना वही था ना जब मेरे गेम जैम में बना था बैक इन द डे। मेरे को अच्छा लगा था, मेरे को बहुत मजा आ गया था वो गेम को देख के। एंड या दोस्तों 58 लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी नया है एक बार लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो भी गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है उनके साथ इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए ताकि वो लोग आए, ज्वाइन हो और जो क्वेश्चंस वगैरह है वो पूछ सके। विपिन रजकोटिया, थैंक यू वेरी मच फॉर 20 रुपीज सुपर चैट। सर शायद आपने, सॉरी गाइस, थोड़ा सा एक अर्जेंट टेक्स्ट मैसेज आया था, उसका रिप्लाई देना पड़ता। आपके गेम का नाम क्या है? जावेद अंसारी, हमारे गेम का नाम है मुंबई गलीस, जो फिलहाल डेवलपमेंट में चल रहा है। सो व्हाट शुड बी अ माइंडसेट ऑफ अ सीईओ, व्हाट टू डू एज अ सीईओ एवरी डे? तो दिलजीत सोलंकी, जस्ट वन सेकेंड, एक मिनट। ओके, सॉरी, आई थिंक मेरे को लगा किसी ने नॉक किया है। ओके, आई वाज आंसरिंग अ क्वेश्चन कि व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ अ सीईओ। Love from Canada. Thank you, Nonu Sharma. Love from Mumbai. Love from India. Okay, so what should be the mindset of a CEO? Well, first and foremost, to care about your staff, to understand and talk to them. I think this is something that I've been learning myself as well, trying to implement this slowly, steadily, to try and get in touch with them, understand their problems, have patience with people, and not to get stressed under stressful situations. I think that is the most biggest challenge of a CEO, that you are constantly surrounded by stress. You have to make sure that stress does not get the best of you, and you have to go through that. You have to just keep on solving problem after problem, because when you start a company, when you run a company, there's an endless list of problems. So it is all about problem solving. See, when you start a new company, you start with the vision of solving one particular problem, any problem. Okay, so let's say if you're starting a game development company, the problem that you're solving is that of entertainment. The problem statement is that, okay, we want to create a game that does not exist in the market. So that is a problem. Okay, you start building a team to solve that problem. Now your problem changes. Now your problem is not to solve the problem, but now your problem is to hire that team, to hire the right set of resources to uh, create your game. Then your next problem is, how do you pay these people? So your next problem is to figure out how can your company earn. Then after that, once you do find a solution to that, and then that cycle goes on repeating. It's like an endless loop of problems. So as a CEO, you need to equip yourself with the patience required to deal with all of these problems. So I hope I was able to answer this question. It is much more detailed than this, and this is something that you will only learn over a period of time. So it takes time and it takes patience. Harsh Goswami, thank you very much for becoming a member of my channel. Welcome to the Nikhil Malankar Club.
And दोस्तों, I just have to tell this, I really appreciate each and every um, super chat that you all send. You know, the money part is secondary. Um, Fortunately, I am now well to do, so I don't really have the requirement for the money that you guys are sending. However, I'm very grateful that even after this, you all still do send all your super chats, and the amount don't matter, like 20 रुपया 30 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, it doesn't matter. It is the intent with which you give the money to me. It's like you think that I'm capable enough to deliver some kind of value to you, and that is the reason why I am like forever grateful, like forever grateful to each and every one of you. Thank you very much. Okay, sir, I'm a student of psychology. I'm interested in game design. Can I apply for a job in gaming company? Happy boy, you most certainly can. What I would recommend you to do is first create a game design document on any game that you like. Find out what makes that game fun to play, and then with that document, or not just one document, create like 3 to 4 documents, okay, on different games. Create that document and then apply for a job. Then when the company asks you what is the work that you've done, you can present that document to the company in the interview process, that hey, look, this is what I've made. Okay. So if you want to become a game designer, the first and foremost thing you need to do is to be able to document, is to be able to create something known as a game design document. Okay. So if you can do that, if you can prove your worth to a company, then most certainly you can apply for a job as a game designer. Please say my name, big fan. Anupam Verma, Anupam Verma, Anupam Verma, Anupam Verma. बोल दिया आपका name. Will you make any multiplayer football game like FIFA in the future for mobile or PC? Idyllic, never say never. I mean, फ्यूचर की बात की है, आपने पूछा है कि आगे जाके बना सकते हो कि नहीं, तो पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है. शादी का व्लॉग कब आ रहा है? या शादी का व्लॉग की एडिटिंग हो चुकी है, तो हमने जिनको हायर किया था उन्होंने एडिटिंग कंप्लीट कर दी है, तो वो अभी मैं चेक करूँगा ये स्ट्रीम के बाद, एंड सब सही लगा तो फिर वो मैं आई थिंक कल तक मैं अपलोड कर दूंगा. मेरा नाम भी लो. आई एम बिग फैन टू PS रियल नेम. KCS.tech सार्थक शर्मा. ले लो आपका, देखो आपका भी नाम ले लिया. Why Minecraft becomes so successful by one person? So Elo space Minecraft is like an outlier, and outliers exist. Outlier in the sense कि 1 in a million चांस रहता है कि कोई ये गेम इतना सक्सेसफुल हो जाए कि वो एकदम हिट हो जाए, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सेम स्टोरी हर एक गेम के साथ हो. ओके. माइनक्राफ्ट एक बहुत ही एक अलग एग्जाम्पल है कि यार ये गेम चल गया. ओके. दिस कैन हैपन टू अ लॉट ऑफ रीजंस. इट इज मोस्टली लक. ओके. बिकॉज जब आप गेम लॉन्च करते हो उस टाइम पे कोई गारंटी नहीं रहती कि आपका गेम मार्केट में कैसे परफॉर्म करेगा या फिर इसको कितने लोग खेलेंगे. और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कुछ गेम्स इतने ज़्यादा जल्दी पिकअप किए जाते हैं कि वो जस्ट वायरल हो जाते हैं. कभी कभी वो गेम के साथ सक्सेस बहुत जल्दी मिलता है, कभी कभी सक्सेस को टाइम लगता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक and your users who find your game. Can you do a game jam? It's Arnav. We are very much planning a public game jam, and the details of that will be announced very soon on my channel. So stay tuned. We'll be announcing a game jam very soon because this is something that I have also been conceptualizing for a while. तो मेरे पास कोई गेम नहीं है बट एक गेम आइडिया है, तो क्या पब्लिशर उस आइडिया पे फंडिंग दे देंगे या खुद की कंपनी भी चाहिए? तो राहुल, देखिए, सिर्फ आइडिया के ऊपर कोई फंडिंग नहीं देता. ठीक है. आपके पास आइडिया है तो रियलिटी ऑफ द सिचुएशन ऐसी है कि आइडिया हर एक के पास है. ओके, टू बी ऑनेस्ट. और अच्छे अच्छे आइडियाज है, एंड आई एम श्योर आपकी भी आइडिया काफ़ी अच्छी होगी. बट जो पब्लिशर है वो क्या देखता है? वो ये देखता है कि ओके, इस बंदे के पास आइडिया है, बट क्या ये बंदे के पास आइडिया के साथ वो टीम है जो इस पर्टिकुलर आइडिया को रियल लाइफ में कन्वर्ट करके एक गेम बना पाए. ओके. तो ये सारी चीज़ें होती है जो आपको दिमाग में रखनी पड़ती है. एक ही मिनट दोस्तों.
सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पब्लिशर ये देखता है कि भले आपके पास आइडिया हो, बट आपको एक्चुअली एक टीम लगती है, या फिर एटलीस्ट उनको एक कैपेबिलिटी पे भरोसा होना चाहिए कि आप ये गेम बना सकते हो। रखो, आई थिंक यूनिटी इज अ वेरी मच अ गुड इंजन। एज अ recruiter, what do you look for in a 3D artist to hire him? So we, as a recruiter, we look after first our requirements, okay, and whether or not that particular resource can deliver on that requirement. If that resource can deliver on that requirement, then we hire them. So it depends, like it depends on various factors on what job role are we hiring for. Is it for creating a 3D model? Is it an animator? Is it a rigging artist? Is it VFX artist, what? That is the first criteria. Then second criteria is how effectively they are able to use a software, and that is directly demonstrated through their previous work samples. So उन्होंने अगर पिछला कुछ काम किया होगा, तो उससे हमको प्रॉपरली आइडिया पता चल जाती है कि यार इसने किस टाइप का काम किया है, और उस हिसाब से हम लोग को फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ओके, इसको हायर करना है या नहीं करना है। गेम डिबिक्स स्टूडियो, हेलो। आर यू सेल्फ पब्लिशिंग मुंबई गलीज और हैव यू फाउंड अ पब्लिशर? यार, हम लोग तो पब्लिशर के साथ जाने वाले हैं, और हम लोग का जो गेम है उसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अनाउंस करने वाला हूँ। सर, हाउ टू मेक एम्प्लॉयज डू थिंग्स देयर सेल्फ एज अ सीईओ, मेनी टाइम्स आई गेट स्टक इन थिंकिंग ऑल थिंग्स माई सेल्फ। तो ब्रिजेश, वन थिंग दैट यू कैन डू इज, when you are a CEO, slowly and steadily what you need to do is you need to start replacing yourself with that particular function. Okay, so I'll give my example. Okay, when I started my company, it was a 3-member team. 3 लोग थे. Okay, 3 लोग, सिर्फ 3 लोग. आज की तारीख में हमारी कंपनी में 55 लोग हैं. 50 से ज़्यादा लोग हैं हमारी कंपनी में जो काम करते हैं आज की तारीख में. जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, तो मेरा प्राइमरी रोल था, ओके, ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 की. ओके, 2013 में तो हम लोग बस बच्चे थे, हम लोग ने ऐसी भी कंपनी स्टार्ट की थी. बट 2018 में मैंने सोचा कि यार ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना है, और अच्छे से पूरा सीरियसली इसको लेना है. तो 2018 में के एंड में मैंने 3 लोगों को हायर, लाइक 3 लोगों की टीम बनाई. एक मैं खुद था. ओके, सो टोटल मैंने 2 लोगों को हायर किए. तो सबसे पहला मैंने सोचा कि मैं काम लेके आऊँगा. मैं काम लाने में एक्सपर्ट हूँ, मेरे को क्लाइंट्स को क्लोज करना इजीली आता है, तो मैं क्लाइंट को हैंडल करूँगा. और मैं प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहता था मैं, क्योंकि अगर मैं प्रोग्रामिंग में बैठता तो फिर मैं क्लाइंट्स नहीं ला पाता. तो प्रोग्रामर मैंने हायर कर लिया. ओके, हालांकि मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, आई एम वेरी मच केपेबल टू कोड माई ओन गेम्स, और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने खुद ने कोड किए थे अप टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मैंने उठाया था, उसके अंदर अंदर क्लाइंट का के साथ कोऑर्डिनेशन और प्रोग्रामिंग मैंने खुद की थी. आर्ट मैंने आउटसोर्स किया था. ठीक है, बिकॉज मैं जानता हूँ मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेट्स फेस इट. तो मैंने जो भी प्रोजेक्ट लिया था उसमें से मैंने आर्टिस्ट को हायर किया, और मैं खुद प्रोग्रामर बन गया. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार, ये जो चीज़ है, अगर मैं प्रोग्रामिंग में बैठे रहा तो फिर मैं और ज़्यादा काम नहीं ला पाऊँगा. ओके, और ज़्यादा क्लाइंट्स ऑनबोर्ड नहीं कर पाऊँगा, और उस हिसाब से फिर ग्रोथ नहीं कर पाऊँगा. तो मुझे लगा कि यार चलो, आर्ट तो मेरे को आता नहीं है, तो आर्ट के लिए तो मेरे को हायर करना ही है. प्रोग्रामिंग में कर सकता हूँ, बट अगर मैं वो करूँगा तो फिर मैं काम ज़्यादा नहीं ला पाऊँगा. इसलिए मैंने प्रोग्रामर को हायर किया. धीरे धीरे करते करते यही चीज़ मैंने रिपीट की, कि जहाँ पे मैं कुछ चीज़ नहीं कर सकता या फिर नहीं करना चाहता, उसमें मैंने लोगों को हायर किया. और फिर इवेंचुअली ऐसा टाइम आया कि लोगों को हायर करने के लिए भी मैंने किसी को हायर की. दैट इज माई एच आर. ओके, पैसों का लेन देन रखने के लिए अकाउंट्स टीम हायर की, गेम के अंदर साउंड्स बनाने के लिए ऑडियो टीम हायर की. तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, और जो चीज़ आप नहीं करना चाहते वो आप ठान लीजिए कि वो आपको सिर्फ वर्स्ट केस में करनी है. बिकॉज ऑब्वियसली आपकी कंपनी है, तो आपको एट द एंड तो ये चीज़ें संभालनी ही पड़ेगी. बट एकदम वर्स्ट केस जब आ जाता है ना, तब ही खुद इन्वॉल्व हो जाओ. वरना ऐसे लोगों को हायर करो जो आपसे बेटर हो.
जो आपके आइदर आपके लेवल के हो या फिर आपके बेटर हो। आपसे जब जूनियर लोग आप हायर करोगे ना, तो उस टाइम पे आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप किसी सीनियर को हायर करो जो आपके जैसा हो या फिर आपसे बेटर हो, और फिर जूनियर्स को हायर करो, बिकॉज वो जो सीनियर्स है इवेंचुअली वो जूनियर्स को हायर करेंगे। आयुष रावत 10th A, can I become an artist and a programmer both? You can, but I would not recommend it, because एक अच्छा प्रोग्रामर अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकता, एक अच्छा आर्टिस्ट अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन सकता। एंड इसमें एक्सेप्शंस है, ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये थंब रूल ही है, बट ये मेजरली ऑब्जर्व्ड है। कुछ कुछ डेवलपर्स है जो अच्छे आर्टिस्ट भी है, फॉर श्योर, बट फोकस चाहिए रहता है। कैन वी मेक अनचार्टेड 4 इन यूनिटी? यार यू कैन, बट यू विल गेट बर्नट आउट इन मेकिंग such a big game. What game are you most proud of developing and why? Abhay Gyan, the game that I'm most proud of developing has to be my very first game. That is kite flying game. You know, it was not the best game. Gameplay ke terms mein, it was not the best game at all. It's a very simple game, but I enjoyed that process. It still remains the best game that I have created, according to me. I cannot answer for everyone else, but for me, that process was the most enjoyable, because at that time it was all fun and games for us. It was like we were just making this to have fun. So I really enjoyed that process, and now I'm enjoying the process of being able to, you know, enable the development of Mumbai Gullies. So Mumbai Gullies is certainly going to be my big dream project that is now becoming a reality day by day. But certainly, Kite was the first game that I had developed. पीछे कर कर आवाज आ रही है यार, सॉरी दे यार। आई थिंक एसी शायद चालू है, शायद एसी का आवाज आ रहा होगा या फिर कुछ डिस्टरबेंस होगा। हाँ, थोड़ा एसी का ही आवाज है वो, थोड़ा सा मैनेज कर लो ब्रो। सर क्या आपके गेम्स विंडो पे लाइव गए क्या सर? राहुल, यस, एक्चुअली हमारा एक गेम विंडो के ऊपर लाइव गया है। अनफॉर्चुनेटली एज पर आवर एग्रीमेंट वी आर नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज कि वो कौन सा गेम है, बट यस, फाइनली हमारा एक गेम विंडो के ऊपर लाइव चला गया है। हाउ विल मुंबई पुलिस मेक मनी टू बी प्रॉफिटेबल? Drijesh, it's purely through sales and DLCs. We will be pricing Mumbai Glees at a certain price point, and we are projecting certain number of sales. We are confident that we will easily cross or at least achieve that projection milestone, and we will be profitable once the game gets out in the market. Will Mumbai Glees have an accurate map or contemporary one? I've answered this, Dayal. Mumbai Gillies is not going to be an accurate 1:1 representation. It is certainly going to be a fictional map, so to speak. इंडिया में गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री कितने साल तक चलेगा? एंड तक यार, एंड तक। जब तक दुनिया है तब तक गेम्स है। मुंबई गिलीज पीसी में कितनी एमबी का होगा? यार एमबी तो पता नहीं, बट डेफिनेटली जीबी का होगा। कैन यू मेक अ वीडियो ऑन पोर्टफोलियो विद एग्जांपल प्लीज? ग्राफी, ओके। Game Debix Studio, I think I missed your question. And guys, I hope you all understand कि इतने सारे क्वेश्चंस है, सो आई कैन नॉट रीड थ्रू ऑल ऑफ देम, बिकॉज मेरे को रीड भी करना रहता है और आंसर भी करना रहता है। So that's the reason why I'm not able to answer each and every question. However, if you do a super chat or something, if you do a super chat, then वो questions मैं priority पे instantly pick करता हूँ, because you have made that investment of sorts. Okay, so if you want me to answer your question थोड़ा सा priority basis पे, you can send a super chat in the question. I'm not saying that मैं सिर्फ super chat वाले ही questions लूँगा. I will try and answer as many questions as I can, but super chat वाले जो questions है वो highlight हो जाते हैं और
उनके ऊपर थोड़ा सा एक ये आ जाता है कि यार ये तो मेरे को आंसर करना ही है, क्योंकि यार मेरे को बंदे ने पैसे दिए। ओके, ऐसा मत सोचो कि यार ये भी पैसों का लालची हो गया है, या ये मेरे को मालूम है ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि यार ये क्या है, ये पैसे मांग रहा है। ऐसा नहीं है। बस सीन क्या है कि अपने अभी सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं, बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है मैसेजेस की, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है कभी कभी आंसर करने में सारे क्वेश्चंस। तो प्रायोरिटी पे अगर क्वेश्चन का आंसर चाहिए, यू कैन सेंड अ सुपर चैट along with your question and I'll try to answer your question. एंड अगर कोई क्वेश्चन मिस आउट हो जाता है तो फिर यार apologies. I'm currently working on my FPS, but I'm not happy with the movement. Why to make it more smooth? Why to make it more smooth, or how to make it more smooth? So, Grafi, it is a good question. I'm not sure how to answer that question. At the end of the day, it is all about the feel of the game, right? So, this is generally decided by a game designer and conceptualized by a game designer. Game designer आपको values वगैरह देगा कि कौन सा कितने इस पे आपकी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, वो सारे वैल्यूज आपको एक गेम डिजाइनर देगा. You have to actually test it out. स्मूथ क्या होता है, ये लाइक इन टर्म्स ऑफ कोडिंग द फंक्शनैलिटी इट्स वेरी सिंपल. आपको थोड़े रोटेशंस ऐड करने हैं, थोड़े फिर बाद में उसको मूवमेंट या फिर जर्क वगैरह देना है. आई वुड सजेस्ट प्ले सम गेम्स, ऑब्जर्व कि उसमें कैसे मूवमेंट हो रहे हैं, एंड ट्राई टू रेप्लिकेट दैट यूजिंग लॉजिक. Try to go through some tutorials on character controller, and that's how you'll be able to do that. Okay, Dayal RP says, please provide us with a resource to see examples of game design document. Okay. I think if you just type in game design document online, here's a very good website. You can check this out. See, at the end of the day, it is all about researching. And what is the easiest way to research? Well, simple. Do a Google search. Can I become a game developer at the age of 14? While there is nothing stopping you from doing that, I think wait for a bit. Game DivX Studio, thank you very much for 100 rupees super chat. Game DivX, you were supposed to write your question along with the 100 rupees super chat, but it's fine. I'll try to find out your particular question and I'll try to answer it. So please ask your question once again. I will keep an eye for your question and I'll answer it with priority. Uh, Game DivX Studio, please ask your question again, please. And Kushal, thank you very much for 20 rupees super chat. Dark Adnan, welcome to the Nikhil Malankar Club. Will you beat Rockstar Games? We will just create our own legacy. I'm not here to compete with anyone. I'm not here to, beat uh, another studio or something. We have our own identity and we'll just be the best at what we do. How can I monetize my games? So Jason, the way that you can monetize your games is two ways. Either through ads or through in-app purchases. Ads is you can use systems like Google AdMob, Chartboost, Wangle to monetize through ads. And certainly there are items that you can sell in your game. You can also have an in-app purchase for removing ads as well. So please give some Mumbai Gullies update, please. तो मुंबई गली से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं. स्टे ट्यून्ड. एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं अभी फिलहाल nahi de pa raha because of certain reasons, but I'm personally excited to actually announce this big thing because it is really big, big. Okay, Game Devic Studio, our team is working on mobile multiplayer. Is it viable after 1 year, and GTD should complete in pre-production stage or needs to be updated in production too? So after 1 year, GDD completion is a good timeline, but I think don't spend so much time on the GDD. Try to create your game design document in like 2 months, 3 months at max, and try to get started with the pre-production process as fast as you can. And like, don't rush it, certainly, but keep timelines. First, you need to create the game design document that is at the biggest priority, highest priority.
After that, once you do that, you start prototyping. So 1 year, I think 1 year is even a good timeline to finish development of your a game, uh, a multiplayer game. I think it's fine. It's fine. I mean, you can very much finish the development of the game as well. What was your rank in JW exam? I haven't cleared JW. I haven't cleared JW. मुंबई गिलीज का मैप GTA 5 से बड़ा होगा. सो मुंबई गलीज फाइनल चैप्टर जो है उसका मैप डेफिनेटली GTA 5 से बड़ा होगा. मुंबई गलीज प्रोलॉग जो है वो GTA 5 से छोटा होगा उसका मैप. आज आप थके हुए लग रहे हैं. कुशल यार, बस अभी काम के सिलसिले में भागा दौड़ी होती रहती है. Weber Rathod, can you suggest me a best laptop under 1 lakh? Well, there is Acer Nitro 5. That's a good laptop. Asus tough gaming वाला laptop भी अच्छा है. So these two are my suggestions. GTA 5 से बड़ा, that's a big claim, my friend. Mirror, as I said, it is the final chapter that is going to be bigger than GTA 5. And we've done the calculation, so yeah. Ruchi, hello, sir, how are you? How your life changed after marriage? Please reply. So Ruchi, thanks a lot for asking that question, and I think it's been a transition stage. Still trying to adjust with the new life. It's been a learning experience, to be honest, and now we are also trying to find our balance with work and personal life. तो अभी थोड़ा सा transition phase चल रहा है, but I'm very happy, with the way that things are moving. Dark Adnan, what was your question, Dark Adnan? I'm sorry, I think I missed your question. Please answer my question, it's really important to me. डार्क अदनान, आपके पिछले कुछ टेक्स्ट में पढ़ रहा हूँ, उसमें यही दिख के आ रहा है कि सर प्लीज आंसर माय क्वेश्चन. ओके, रुको, मिल गया. सर मेरे पास गेम स्क्रिप्ट है और गेम कॉन्सेप्ट भी है, बट मेरे पास बजट नहीं है और हम दो लोग ही है. इट इज़ माई ड्रीम गेम, मैं इस पर काम करना चाहता हूँ. कैन यू गिव सम सजेशंस? तो डार्क करना, अगर आप दो लोग हो तो इनफ है. को पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने पैशन को फॉलो करना है. एंड सिंस आपके ऊपर कुछ लाइबिलिटी नहीं है, आई अज्यूम, तो गिव इट अ ट्राई. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप गेम के ऊपर काम करोगे. वो अगर मार्केट में नहीं चला देन आप दूसरे गेम के ऊपर काम करो. ट्राई टू मेक as many things as you can by yourself. Okay. And Dark Adnan, wishing you all the best for your game. गोपाल चौधरी, प्लीज टेल हाउ टू कोलैब विद यू. सो अगर मेरे साथ कोलैब करना है तो फिर यू विल हैव टू स्पीक विद माय टीम. नाउअडेज कोलैबोरेशंस आर ऑन अ पेड बेसिस. लाइक जो भी मेरे यूट्यूब के कोलैबोरेशंस है, आई एम लुक फॉर अ पेड कोलैबोरेशन, just because of lack of time, I would say. So just so that my time is valued, we kind of have commercials attached to those collaborations. And if you are looking forward to collab with me, you can just send me a mail on nikhil.malankar@gmail.com. तो अब तक तो आपने रफ्तार और मिथपैट से कोलैबोरेशन कर लिया होगा ना? तो राहुल यार, रफ्तार और मिथपैट से फिलहाल तक कोलैबोरेशन नहीं हुआ है. मिथपैट से बात हुई है, सर्टेनली मिथपैट तो रेडी है अपने गेम को सपोर्ट करने के लिए इन एनी वे व्हाट्सोएवर. रफ्तार के साथ आई थिंक जो कॉन्वर्जेशन हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा वो कॉन्वर्जेशन ठंडा पड़ गया है. और वो इस वजह से बिकॉज मैं वॉज ऑक्यूपाइड इन माई मैरिज, एंड उस वजह से फिर फॉलो अप नहीं ले पाया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो देखते हैं, अभी अपने पास वापस मैं आ गया हूँ ऑन ट्रैक. होपफुली वी विल गेट बैक इन टच विद हिम एंड हम लोग कुछ करते हैं. तो दोस्तों 125 लाइक्स हो गए हैं. आज का टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का. तो जो भी नया है, एक बार यार लाइक बटन प्रेस कर दीजिए. 200 टारगेट रखा है, बहुत कम टारगेट है. आई एम श्योर आपसे हो ही जाएगा. और अगर नहीं हुआ है टारगेट तो फिर यार दोस्तों को लेके आओ, थोड़ा लाइक बटन प्रेस प्रेस करवाओ यार थोड़ा. ऑल्सो एट ट्रिगर्ड इंसान, यार बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि आई लुक लाइक ट्रिगर्ड इंसान. सो अभी मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे, डू आई लुक लाइक ट्रिगर्ड इंसान. Let us. How was your experience in Game Studios Game Jam? Wow, it was wonderful. It was so good because हमने ये जो गेम जैम है बहुत ही एकदम लास्ट मिनट पे ऑर्गेनाइज किया.
एंड जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा enthusiasm दिखाई to participate in this game jam. So it was a wonderful experience. We had a really great time. एंड मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे गेम्स के ऊपर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर गेम बनेंगे. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड वी ऑल गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस. So all in all was a wonderful time. तो पोल चल रहा है. Why not guy? Which game did you voted for in your game jam? यार मेरे को बहुत गलत सिचुएशन में डाल रहे हो. मैं मेरी टीम से मेरे को पिटवाओगे क्या? मैं नहीं बोल रहा. मैं नहीं बोल रहा. मैंने एक्चुअली किसी टीम को वोट नहीं किया अभी तक. एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं वोट किया बिकॉज मेरे साइड से फिर वो थोड़ा सा ऐसा बायस हो जाएगा कि यार. और फिर बाद में किसी या दूसरी टीम को वोट नहीं किया तो फिर वो खाली पेट खुन्नस. तो फिर आई हैवंट वोटेड एनीवन. ओके. ओके मैं कर रहा हूँ पोल एंड. कितने 59 वोट्स हुए. 50% लोग बोल रहे हैं नो और 49% बोल रहे हैं यस. ये कैसे होता है भाई? 50-50 होना चाहिए ना. ये 50 और 49 क्या होता है? दो ही तो ऑप्शन थे. यूट्यूब ग्लिच है बेटा. यूट्यूब ग्लिच है. एम जी टॉपिक्स इज नाउ हियर. एम जी टॉपिक्स आप ये सुन के खुश होंगे कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है मुंबई के लिए रिलेटेड जो आप अनाउंस कर पाओगे. बट फिलहाल मैं उस चीज़ को अनाउंस नहीं कर सकता. स्टे ट्यून्ड. So what do you think of Winzo as a business? Is it good, like entry fees and prize money? Isn't it like gambling? So Drijesh, it borders a bit on that, but it is very much falling under the skill-based games category. Gambling is wherein you are relying purely on luck, okay? Whereas Winzo's model is very much on skills. So the games that you see on their platform, they are like racing games or fighting games or games like that. So if you look at their entire business model, that is completely different. Shantanu Udasi, how do you manage time for your family? Shantanu, I am actually not able to manage much time for my family. It is unfortunate, but the situation that I am in right now is just that is an area that does take a back seat because when you're working on something, you have to dedicate your time to it. There is no way that you can water down that effort. And yeah, I mean, family does take a back seat. Will mountains be in Mumbai Gillies? Yeah, yeah, there will be mountains. Wait, mountains. अरे रुको यार. क्वेश्चन पूछते हो तो फिर मैं कुछ भी आंसर कर. Mountains. See, there is a mountain area in Mumbai. Okay, वो नेशनल पार्क वाला थोड़ा सा जो एरिया है वहाँ पे माउंटेन्स है. बट यू नो whether or not it will be a part of Mumbai Gillies, I cannot comment on right now. सर क्या मिचपैट आपसे पैसे भी चार्ज करेगा? यार पैसे चार्ज करेगा तो फिर भी क्या दिक्कत है? बट आई थिंक अब तक मिचपैट इज रेडी टू सपोर्ट द गेम एट नो कॉस्ट. But I understand and I respect the audience that he's built. So even if he does charge, that's fine. I don't think that he will. Okay, I don't think that he will. But even if he does, I think it's worth it. He's earned his place. He has that command over his audience, and I'm sure like he has supported us in the past without charging us, right? Like जो हमारे साथ उन्होंने स्ट्रीम की थी हमारे गेम की प्रूविंग ग्राउंड्स उसमें मिथपैट didn't charge anything. Mithpat came along, played on my channel, talked with me, connected with our subscribers. He did not charge anything for that. So, I mean, that's fine, right? That's fine. Games on Play Store has very less downloads. How will you be able to sustain your company revenue sources? So, Sarita Singh, see, mobile games as of now are very small vertical.
Majority of our games are having less number of downloads, but that is just what you see on the Play Store. Apart from this, we have a strong B2B connect wherein we make games for other clients, and that is our primary source of revenue. Apart from this, we already have raised capital. We have raised some investment so that we are able to sustain our operations. That is the reason why we are able to survive. And now we are also raising another round of fundraise, so that covers our costs. So what we are looking at is really doing a break even after Mumbai Gillies or our PC games are launched, right? And we are confident that will be able to do that. Your thoughts on God of War Ragnarok released date announced today. So I'm excited. You know, I'm certainly excited. I haven't like seen if there is a trailer or something along with that. I haven't seen that. I did read that the release date was announced. So I'm certainly excited for the next chapter because I have played God of War 4. I've played the entire game. I've completed that. So from a continuity perspective, I'm looking forward what happens next, right? So I think I will be taking out some time when that game is launched, and I'll try to perhaps even do a stream. Would you guys like me to do a stream of God of War Ragnarok on my channel? Because primarily ये गेमिंग चैनल नहीं है, राइट? ये गेमिंग चैनल नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि मैं जब भी खेलूँ और उसको मैं स्ट्रीम करूँ, तो I'll do that. So let me just ask, do you want me to stream God of War Ragnarok on my channel? Let us see. What do you think about Web3 gaming? I think it's fun, great, but people are not ready for this right now. So, Drijesh, like my knowledge in the Web3 space is also very limited. Even I'm trying to make sense of what's going on. I have no answer for that as of now. I don't know. I don't know. Like, honestly, I don't know. Uh, uh, 53 लोग हैं चैनल के ऊपर। चैनल को चैनल को नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चैनल इज लाइक गेमिंग न्यूज़ चैनल बट खुद का गेम खुद की न्यूज़। परसा ही बोलते। या आई मीन इट इज़ लाइक ओके, यहाँ मेरा चैनल है, मैं गेम्स के बारे में बात करता हूँ, बट इट इज़ ऑल्सो अ मार्केटिंग चैनल फॉर मी, राइट? मतलब मैं जो भी चीज़ें के ऊपर काम करता हूँ, जो भी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, तो मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ। हाउ टू स्टार्ट विद जीरो फॉर ओपन वर्ल्ड गेम्स? So Parth, that is how I started. Like really, I started from zero. So take a look at my journey. Take a look at what I did, and I have covered this through and through again and again on my channel. So I think I will also create a new video, and this gives me a good idea that how I started my company and how I reached where I am. Because मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक्चुअली बहुत सारी वीडियोस बना के रखे, तो जस्ट चेक आउट माय चैनल वंस, मैंने उसके ऊपर इन डिटेल मेंशन कर रखा है। राहुल नहीं, वो हमारी गेम नहीं है। Should I focus on Unity on Unreal for future? Up to you what you want to make. 36% ने yes बोला है और 23% ने no बोला है। तो यार जिन लोगों ने no बोला है मेरे को बताइए क्यों आपको लगता है कि मेरे को नहीं स्ट्रीम करना चाहिए? What about a bit? Do you know when is it coming? यार I have no idea. I have not spoken with Assassino Manik since quite a while, and I don't know what he's up to right now. So no, I don't know what or when that game will arrive. I don't like God of War. I don't know my name. How old am I? I am 28 years old. Do you invest in crypto? No. I had some investment, but then I exited from that investment. So no, I don't have any investment in crypto as of now. Zero.
Is visual novel market uh, small in India? Well, it's not that small. People like to play such games. It is just that it is not as popular as it is abroad. I'll also stream your game on my Moj account. It will help you थोड़ा बहुत around 150K followers है तो थोड़ी marketing हम भी करेंगे. और साई बोलती thank you very much. I think that means a lot. 150K followers is not a small number at all. So I think that will be certainly a very good help. So, thanks a lot for that. Thanks a lot. I think we look forward to getting a game promoted from your channel. And I think this is the best thing about the community that we built here, right? हम लोग ने स्टार्ट किया था. वी हैड लाइक जीरो से सब स्टार्ट करते हैं, वैसे ही अपना चैनल भी जीरो से स्टार्ट हुआ था. धीरे धीरे 1,000 सब्सक्राइबर्स हुए, 100,000 हुए, एंड हियर वी आर नाउ. तो मेरे को तो कॉन्फिडेंट है कि यार जब भी मुंबई के लिए आएगा, आप लोग में से काफ़ी सारे लोग इसको स्ट्रीम करना स्टार्ट करेंगे. बिकॉज ये ऐसा गेम है जिसके लिए एक्चुअली मैं बोलने जाऊँ तो पूरा इंडिया रुका हुआ है. इंडिया में बहुत पॉपुलर है ये गेम. और मेरे को कभी इतना अंदाज़ा नहीं हुआ था. मतलब मैं चाहता ज़रूर था, बट मेरे को ऐसा अंदाज़ा नहीं था इसके स्केल का कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, राइट. तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है. एंड मैं खुद एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि कैसे लोग इसको खेलते हैं, क्या क्या रिएक्शंस आते हैं, क्या क्या मज़ेदार चीज़ें करते हैं लोग इस गेम में. वो सब देखने में यार बहुत मज़ा आएगा. गरबाज गाइस वीडियोस वर्थ वॉचिंग. यार मैंने देखा नहीं है गरबाज गाइस वीडियो. What will be Mumbai Gilly's size? Too early to comment on. We can't comment on a game's size during its development process. Why don't some companies port the old PS2 exclusive games like Tekken or DOA RDR to PC like Capcom did for DNC and Konami did for Contra? It is more of a company decision. There can be multiple reasons. Perhaps they just don't have the resources to deploy to that project, or maybe their market research says that perhaps that game might not do well in terms of sales. It can be multiple reasons. Please change Wednesday live stream to Sunday. Yash, I cannot. I cannot stream on Sunday because Sunday is like a proper personal time, and I keep it on Wednesdays because Wednesday is like the mid of the week, right? So I'm still in my work mode. I can still put in time over here and I can, be live, interact with you all. Sunday is proper personal time, like proper, complete personal time. That time I'd like to, you know, stay away from work related stuff. And it is that break that you need, because if you keep on continuously working, you will get burnt out. So Sundays, I typically avoid doing any work stuff nowadays. Nowadays, okay. I used to work on Sundays back in the day, most certainly. But now I've kind of, kept Sundays as a personal time. मुंबई फ्लड्स एंड मुंबई गलीज. मुंबई गलीज का तो पता नहीं, बट अभी यहाँ पे धीरे धीरे फ्लड्स होना स्टार्ट हो गए हैं. पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उस हिसाब से हम लोग इवन वर्क स्केड्यूल्स को एडजस्ट कर रहे हैं. हाउ टू डू मार्केटिंग ऑफ अ गेम और स्टार्टअप फ्रॉम जीरो? It's all about building community, Rajesh. It's all about spreading your um word of mouth amidst people. And at the end of the day, it all boils down to the quality of work that you deliver and the kind of relations that you build. See, you don't have to reach out to a million people. You don't have to, have millions of downloads on your game. You can have a game that has, say, 10,000 downloads or 20,000 downloads, and 8,000 active users who are actually playing your game. So it's not about, the things that we generally think. It is about the abstract behind that. I know थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, but I'm trying to answer this question from a perspective of my understanding और मेरा जो experience रहा है. Madhusudan Naik, can you just type your question again? And guys, as I've said,
कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो मेरे से मिस आउट हो जाते हैं बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है और उनको पिक करके आंसर करने में टाइम जाता है। अगर हम एक एवरेज पकड़े, हर एक क्वेश्चन को आंसर करने में को 30 से 40 सेकेंड तो लगते हैं। और कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, कितने सारे क्वेश्चन। अगर अपन इसमें से 50 क्वेश्चन भी लेते हैं तो 50 × 40 सेकेंड करके देख लो, हिसाब लगा लो। Sir, can I study BSc in game development after doing mechanical engineering in diploma? Madhusudan Naik, absolutely you can. There is nothing that will stop you. In fact, if you do it after your mechanical engineering, you have a higher degree. So what you can do is then study BSc in game development for your hobby. Because now you already have that degree as a backup option, that mechanical engineering degree as a backup option. You can now pursue BSc in game development as your hobby. So yes, you can. प्रांतिक घोष, वाह, बढ़िया लगा ये नाम देख के। आई रिमेम्बर प्रांतिक घोष हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। एंड काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ इनको, सो अच्छा लगा प्रांतिक टू सी यू ऑन द स्ट्रीम। Can a one man make open world game in 3 years? No, Parth, I don't think you can. Game design document should be completed by end of pre-production, or is it a live document needs to be updated as needed also after production? So Game Debic Studio, thank you very much once again for 100 rupees super chat. I think to answer your question, uh, game design document always is in a bit of a flux, wherein you keep on adding new things to the document. However, I would say 90% of the document should certainly be completed by the end of pre-production, because if you then go back to your game design document and change some critical aspect, that adds to your development time and thereby it increases your cost. So yes, I think 90% of your document should definitely be finished before your pre-production phase. And then of course 10% here and there always happens in every project. So that is fine. But 90% should be fixed and concrete. Like once you decide, you have to do that and you have to finish that. एंड गाइस मेरे को ये बताओ, अच्छा अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसा, मैं एक्चुअली कम्युनिटी टैब में ये डालना चाहता था, ये पर्टिकुलर ऑप्शन, बट कम्युनिटी टैब में मेरे को सिर्फ वो पोल में 5 ऑप्शन देता है, 5 ही ऑप्शन देता है। तो इस वजह से मैं कम्युनिटी टैब में पोल नहीं ले पाया कि आपको कौन सा गेम पसंद आया गेम जैम में जो पार्टिसिपेट करे थे। तो क्विकली आप में से जितने भी लोगों ने यहाँ पे वो गेम जैम वाली वीडियो देखी है, उसमें से आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी थी वो बताइए। और अपने पास अभी कुछ कुछ ही टाइम बचा है यहाँ पे लाइव स्ट्रीम के लिए, तो मेरे को ये भी बताना है कि आज का जो लाइक्स का टारगेट है वो है 200। 172 हो चुके हैं, तो अपने को और कुछ 28 लाइक्स चाहिए, और अपने को अभी 40 लोग देख रहे हैं। तो जो भी नया है एक बार लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और 200 का लाइक का टारगेट कर देते हैं आज का। 200 तो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। 177 हो गया अभी, 179 हो गया है। 200 का लाइक का टारगेट है, 200 कर दो यार, 200 तक पहुंचा दो। A big fan, sir. Lots of love. Thrill for Mumbai release is on. Can't wait. Thank you. Music with Tanesh. ओके हाँ, सो मैं क्या बोल रहा था आपको कि कल का जो गेम जैम वाला वीडियो जो मैंने डाला था, राइट, मेरे चैनल के ऊपर, उसको चेक कीजिए और मेरे को बताइए कि कौन सी फेवरेट गेम है आपकी उसमें से। विल यू एवर कोलैब विद रॉकस्टार गेम्स? टुडे गाय, थैंक यू वेरी मच फॉर 40 rupees. Will we ever collaborate with Rockstar Games? If an opportunity is presented, why not? I mean, Rockstar Games is like the master of open world games, so you would love to collaborate with them. Madan, thank you for 20 rupees super chat. What will happen if I use cracked version of Adobe Photoshop and publish my game in which I used it? Will they sue me? They can, Chaitanya, because you are using pirated software, and there can be a fine imposed on you. I mean, they won't sue you, but they'll just charge you a fine for misusing the license if they find out.
ओके गाइस, अपने लाइक्स के टारगेट के लिए अभी सिर्फ 7 और लाइक्स बचे हैं, तो जो भी नया है लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। 200 लाइक का टारगेट है, कर दीजिए। 194 हो गए हैं, कर दीजिए। I'm currently doing BTech. How can I get a job or internship? Should I wait for placements or try to get soon as I'm in second year and want to be a programmer? So Grafi, the good thing is that for internship, you don't require any experience. Okay, you don't require any experience. So I would say go for it, like right away, right away. Try to find an internship, and I'm pretty sure you will get an internship relatively easier than a full-time job. Okay, the pay might be less, or in some cases there might be no pay either, but go for it. Especially in your education years, since you are in second year, you still have time, so go for it. Go for an internship for 3 months, 4 months, whatever it is, but go for that experience. And I wish you all the best. Ansh Garg, thank you very much for 20 rupees super chat, and thank you to each and every one of you. 200 लाइक्स का टारगेट कर दिया है। अभी इसके आगे जितने लाइक्स करने हैं कर दो। लाइक्स का टारगेट बढ़ा सकते हैं अपन, बट आई थिंक 250 का अगर मैंने टारगेट रखा तो वो शायद अचीव नहीं होगा, बिकॉज मैं अभी स्ट्रीम को 4 मिनट में एंड करने वाला हूँ। Nonetheless, let's try to push ourselves and see कि अगर 250 का टारगेट होता है कि नहीं। अभी तो देख ही रहे हैं 445 लोग, सो 250 का टारगेट होते हुए दिख तो नहीं रहा है। बट जो भी नया है लाइक बटन प्रेस कर दो, एक बार देखते हैं क्या ही जाता है। What is your opinion about metaverse, or is it is going to dominate whole gaming industry? So metaverse के ऊपर मेरा ओपिनियन ऐसा है कि metaverse वाले गेम्स तो रहेंगे ही, साथ ही साथ जो दूसरे टाइप के गेम्स हैं वो भी रहेंगे। It is certainly going to be eventually a majority of the games that or interactive elements that we use in our day-to-day lives. But जो standard games है, those will also exist. Rudy guy, 40 rupees super chat के लिए thank you. Will there be a zoo in Mumbai Gillies? There won't be a zoo in Mumbai Gillies in the prologue. जो छोटा वाला वर्जन बना रहे हैं उसके अंदर अंदर जू नहीं होगा, बट जो बड़ा वाला वर्जन होगा मुंबई गिलीज फाइनल चैप्टर, उसके अंदर एक मुंबई के अंदर एक जू है, संजय गांधी नेशनल पार्क। तो उसी को हम लोग थोड़ा बहुत रेप्लिकेट करने का ट्राई करेंगे फाइनल चैप्टर में, मतलब जो सेकेंड वर्जन आने वाला है उसके अंदर। हाउ मेनी पीपल मेक गेम्स इन 3 years? हाउ मेनी पीपल मेक गेम्स इन 3 years? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर क्वेश्चन इज। गैंगस्टर न्यूयॉर्क टाइप कंट्रोलर इन मुंबई की लिस्ट। ओके, एमजी टॉपिक्स, ओके। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं भी क्वेश्चंस को लेना कर दूंगा बंद, बिकॉज मैं आई डोंट थिंक आंसर कर पाऊंगा, बिकॉज अपने पास अभी 2 ही मिनट बचे हैं। तो मैं मेरा मैंडेटरी आउटरो बोलना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड इसके साथ हम लोग मिलेंगे। मैं अभी मेरी शादी की जो वीडियो है वो अपलोड करने वाला हूँ, शादी का वीलॉग अपलोड होगा। वीलॉग तो नहीं है, वो प्रॉपर वीडियो है, फुल फ्लेश्ड वीडियो है। क्योंकि उस दिन मैं प्रॉपर वीलॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाया ऑब्वियसली, बिकॉज मैं शादी में होकर बैठा था। तो वो वीडियो आने वाली है मेरे वीलॉग चैनल के ऊपर, जाइए वहाँ पे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई थिंक लाइक्स का टारगेट मंडराता हुआ दिख रहा है, तो जो भी नया है यार 200 से ज़्यादा लाइक्स कर ही दो। चलो, बहुत सारे लोग डिसलाइक करके जा रहे हैं, डिसलाइक नहीं, वो लाइक का बटन डबल टाइम प्रेस करके जा रहे हैं, तो फिर वो लाइक का काउंटर नीचे जा रहा है। तो जाते जाते यार थोड़ा सा इज्जत रख लो भाई का। ओके, और 200 से ज़्यादा ही रखना, अगर ट्राई करो। नहीं हुआ तो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। आई विल स्टिल लव यू ऑल, एंड आई नो दैट कुछ कुछ लोग खेल रहे हैं सब्सक्राइब लाइक काउंट के साथ, सो दैट्स फाइन। एनीवे गाइस, आई थिंक दैट्स इट। 1 ही मिनट बचा है, सो मैं मेरा आउटरो बोलना स्टार्ट कर देता हूँ। सोने से पहले ब्रश करना मत भूलिएगा, अपने दांतों का ख्याल रखना ज़रूरी है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये स्ट्रीम पसंद आई, तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल को पहली बार ढूंढे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। एंड मिलता हूँ आपके न्यू वीडियोस में। अच्छा, मेरे को जाते जाते मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। अभी मेरा जो कंटेंट है वो वहाँ पे मैं शॉर्ट्स ज़्यादा अपलोड कर रहा हूँ, मतलब छोटे छोटे वीडियोस ज़्यादा अपलोड कर रहा हूँ, एज अपोज टू जैसे मैं पहले वीडियोस डालता था 6 6 8 8 10 10 मिनट वाले। तो क्या आपको वो कंटेंट पसंद आ रहा है, या फिर मुझे अ, फिर भी एक लॉन्ग वीडियोस बनाते रहना चाहिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं हफ्ते भर में
6 शॉर्ट्स बनाता हूँ, ओके 6 शॉर्ट्स बनाता हूँ और एक लंबा वीडियो बनाता हूँ, तो क्या वो फ्रीक्वेंसी सही रहेगी? 6 शॉर्ट वीडियोस और एक लंबा वीडियो, विल दिस बी अ गुड फ्रीक्वेंसी? बता ही नहीं रहा है। 6 शॉर्ट्स, एक वीडियो, 2 शॉर्ट्स अ डे एंड 5 minute वीडियो अ वीक एंड a live stream every Wednesday. I think that sounds good. That sounds reasonable, Dayal. ठीक है, ठीक है. Feedback taken into consideration. No too long video, 4 short video. Okay, okay. चलो ठीक है, इसके ऊपर सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं. That is it for today's stream. अभी मैं निकलता हूँ. आई होप आपका जो इवनिंग है वो अच्छा रहे. डिनर वगैरह कर लेना टाइम पे. एंड दैट्स इट. थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर.